Okay, hello everybody. Assalamu alaikum. I hope that this session is live now in the group and that I am audible to everybody. Uh, okay, if at all I can see any comments here, it would be really great. Ashuji, in today's live session, basically what I'm going to talk about is a question that I asked a while back in the same group. It was about what are your problems when you speak English? I listed down four problems and I asked for your opinion that what exactly is your challenge? And also, in those challenges, a lot of people said multiple things were the challenges, but I think there were about 250 plus comments. I cannot, of course, go through each one of them, and I cannot say कि जी 10% ने एक कहा प्रॉब्लम और 50% ने दो कहा और 30% ने तीसरा प्रॉब्लम कहा. I think the ratio was probably evenly divided between the four. So I can safely say that 25% of the issue with everybody was the same. जब भी हम speaking की बात करते हैं, खास तौर पे English speaking की बात करते हैं, why? Because it's the second language, because we have to acquire it, because we are learning it for so long. But when it comes to speaking, we lack practice. We lack the right kind of environment. We're not surrounded by English people, so of course we're not using it as such. तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम आते हैं. प्रॉब्लम्स क्या आते हैं मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था. क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. आई विल रीड इट आउट फॉर यू गाइज. नंबर वन वाज मेकिंग सेंटेंसेस. जब हम सेंटेंस मेकिंग की बात करते हैं ऑफ कोर्स उसका मतलब है एक फ़िक्रा बनाना, उसमें कौन सी चीज़ किस तरतीब से कहाँ पर आएगी, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे इस्तेमाल होंगे. ऑब्वियसली जब हम ग्रामेटिकल उसके नुआंसेस पर जाते हैं तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है. लेकिन बॉटम लाइन इज़ कि आपको सेंटेंस बनाते हुए मुश्किल आती है. पहला प्रॉब्लम. दूसरा प्रॉब्लम, फाइंडिंग द राइट वर्ड एट द राइट टाइम. if at all I can say it in the language jargon, तो मैं कहूँगी कि वोकेबलरी में प्रॉब्लम आता है. हमें चीज़ों के नाम नहीं पता होते कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह. अगर आप इसको प्रोफेशनल या बिजनेस सेंस में भी कह लें, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के सेंस में कह लें, व्हेन वी वांट टू टॉक टू पीपल अबाउट बिजनेस एंड वी आर नॉट really sure about the business jargon. For example, हमें net profit नहीं पता क्या होता है, हमें हमें profit margins का नहीं पता क्या होता है, ROI का नहीं पता कि क्या होता है. Obviously business के jargons हैं, jargon mean के specific terms हैं और हमें उनका नहीं पता कि वो क्या होती हैं, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते. Similarly, when we are talking about speaking English, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसकी हमें अंग्रेज़ी नहीं आती. ठीक है. ऑब्वियसली हम जब स्कूल कॉलेजेस में ग्रामर्स में पढ़ते थे वहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश चीज़ों के रट्टे भी लगाए होते थे, लेकिन जाहिर बात है वो रियल लाइफ में आपने कभी यूज़ नहीं किए तो आपको याद भी नहीं रहेंगे. सो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड चैलेंज वाज फ्लुएंसी. अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ठहर के बात करना चाहती हूँ. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी और कहते हैं कि जी हम तेज़ तेज़ इंग्लिश नहीं बोल सकते, हमें तेज़ तेज़ बोलना सिखाएं, कि हम फर इंग्लिश बोलेंगे. जो फर बोलने वाला कॉन्सेप्ट है, पीपल टेंड टू ट्रांसलेट इट टू fluency. They say that far English bolna is equal to fluency, which is absolutely not right. Why? Because speed is not equal to fluency. Speed का मतलब है मैं तेज़ी से बात करना शुरू कर दूँ, आपको पता भी नहीं चले ये स्पीड थी. लेकिन फ्लुएंसी का मतलब है कि मुझे पता हो कि सही वक्त पे सही फ़िक्रा कैसे बना रही हूँ, सही अल्फाज का चुनाव कैसे कर रही हूँ, और उसको ठहर ठहर के इस तरीके से अदा करना कि अगला आपकी बात समझ जाए. इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है. हमारा गोल इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है? फ्लुएंसी लाना, ना कि स्पीडीली बोलना. स्पीडीली बोलने का मतलब है कि आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो तेज़ी तेज़ी से बात करते हैं, या जो लोग बहुत गलत बयानी करते हैं या बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं वो तेज़ी से बात करते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन दैट because that's another different topic altogether. But I'm talking about fluency here. Fluency means कि आपको सही लफ्ज़ का सही वक्त पे इस्तेमाल आना चाहिए. That's what fluency is.
ठीक है जी, फोर्थ प्रॉब्लम विच आई मेंशन्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल आंसर्ड कि जी हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, वो था ट्रांसलेटिंग वर्ड्स फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. दिस इज काइंड ऑफ पैरेलल टू फाइंडिंग द राइट वर्ड एट द राइट टाइम. क्योंकि जब हमें राइट टाइम पे राइट वर्ड नहीं मिल रहा होता तो फिर हम देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम उर्दू से उसकी अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करते हैं, विच वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फेल एट. इन सब चीज़ों का हल क्या है, ये मैंने अपनी पोस्ट के आखिर में भी लिखा था. अगर अगर आपको मेरी पोस्ट याद है और आपने उसका रिप्लाई किया था तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर नहीं याद है तो मेरे नाम से ग्रुप में जाके सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा. इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम्स का हल क्या है. स्पोकन इंग्लिश की बात करें चाहे रिटन इंग्लिश की, दो चीज़ें तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने फ़िक्रा कैसे बनाना है, आपने अपनी बात कैसे पहुंचानी है दूसरे को, और आपको लफ्ज़ों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, कि आपको लफ्ज़ पता हो कि अच्छा इस चीज़ को ये कहते हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स के जी, टेबल, चेयर, बेड, लैम्प, नोटबुक एट्सेट्रा. इन चीज़ों की बात नहीं करी ऑफ कोर्स. जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको 10,000 तरह की चीज़ें आपको जहन में आती हैं कि अच्छा इसको पता नहीं क्या कहते होंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करते होंगे, ये चीज़ कैसे बनती होगी. तो ये इन सारी चीज़ों का हल क्या है. देखें, मैं बार बार एक बात करती हूँ. सबसे पहली बात, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, की आपने सुना होगा. लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदल देती हूँ. मैं कहती हूँ प्रैक्टिस मेक्स परमानेंस. प्रैक्टिस मेक्स परमानेंस, यानी जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ उतनी मुस्तकिल आपकी मेमोरी में स्टोर होती जाएगी, उतना ज़्यादा आप उसके ऊपर पक्के हो जाएंगे, आपको याद हो जाएगा. सो प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें सुने भी. I cannot stress this enough, cannot emphasize this enough, that if you have to write well, you'll have to read well first. And by reading well, I mean read anything and everything you come across. You come across the newspaper, you come across blogs, you come across articles, novels, short stories, whatever genre you're interested in, whatever stories and books and novels and magazines and tableaus you want to read, just read them. When you start reading those, it means you're getting bigger exposure now. You're getting more exposure of the word. You're reading, let's say, hundreds of different expressions written by different authors in different situations and contexts. And then you will understand, okay, oh, okay, this is what I can use in this situation. Oh, this is a similar situation. So probably this expression can be used here. So this will help you increase and broaden the exposure of the scenarios that you can come across in the daily life, because obviously stories and articles and novels and all these kinds of books are making and deriving expressions and scenarios from daily life. So when you are exposing yourself to those situations, you will know exactly how to talk about, how to make sentences. You'll, of course, you'll in the beginning copy the sentences, and I don't mind at all. You can copy all you want, because language acquisition is all about copying. अब आप देखें, मैंने इतना बड़ा सा स्ट्रेच जो है वो अंग्रेजी में बोला है उन लोगों के लिए जो एतराज़ करते हैं कि आप अंग्रेजी सिखा रही हैं तो अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती हैं. द प्रॉब्लम इज़ कि मेरी ऑडियंस जो अंग्रेज़ी सीखना चाहती है वो उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है उतना अच्छा. तो जब मैं बिल्कुल इंग्लिश में बात करती हूँ तो फिर देर लाइक इंग्लिश में बात करें, हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या कह रही हैं, उर्दू में बात करें. So basically, what I do is I use a bilingual approach in which I'm using both the languages. I'm switching between both so you can have kind of an idea that what am I trying to say here. Okay, so if you want to write well, you'll have to read well. If you have to speak well, you'll have to listen a lot. And same rule applies here. You'll have to listen to a lot of multiple genres here. You'll have to work with a lot of different kinds of videos, of audios. You can listen to podcasts if you're interested in. You can listen to songs along with the lyrics. They're available on YouTube. And of course, I'm not saying that those kind of vocabularies will be and words and jargons will be used in daily life, but at least you will get a sense of it. It will help you improve your listening comprehension, that when somebody is speaking and you're listening to it, you're able to comprehend, you're able to understand what exactly are they saying, what do they mean, what's the accent, how do they slur. When I say slurring, Americans generally slur a lot. Britishers probably don't slur, but their accent is a lot more difficult to understand than the Americans for a lot of people.
For those people who are interested in British, of course, that will be easier, but that's a different story. You can find hundreds of channels, hundreds of different content creators on the YouTube, which are working on making you understand different differences between the dialects of Australian, Canadian, American, and British, which are four most popular accents. Of course, there are hundreds of dialects in just one America, United States of America is, alone. But my point is, if you have to speak well, you'll have to listen to a lot of things. Listen to podcasts, listen to YouTube videos, TED Talks. I will not suggest BBC and CNN and National Geographic key reports and documentaries. Why? Because that becomes boring and redundant after a while, and the students lose interest. And every other trainer online, every other trainer that I meet suggests the same thing. I do not. I say that simply listen to what interests you the most, so that your interest is there and you listen to it, you absorb it, you repeat it in the daily life. You can probably write it if you want. You'll have to understand how you learn. दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब भी मैं किसी भी चीज़ के ऊपर बात करती हूँ लैंग्वेज के हवाले से या इवन वैसे ही लाइफ स्किल लर्निंग के हवाले से, मैं हमेशा ये कहती हूँ, फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप सीखते कैसे हो। सीखना सीखो, लर्न हाउ यू लर्न, आपका पैटर्न क्या है सीखने का। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अच्छा, मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, या मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलती हूँ, या इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके की मुझे समझ आती है, मुझे याद रहता है। तो वो पैटर्न, आपका अपना पैटर्न जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि अच्छा, ये चीज़ है जो मुझे ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू विल बी इंटरनली मोटिवेटेड, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न मोर, एंड दैट विल हेल्प यू कीप गोइंग. If you have listened to my live sessions ever on the enablers page, I have mentioned it very openly and honestly. It's been about 13 years that I'm learning the language, and there was never one day, even throughout the life, and I'm not lying, not exaggerating about it, there was not even one day when I was bored. कि ओहो बस क्या हो गया, मतलब इस सेम चीज़ें बार बार पढ़े जाओ, यही वही ग्रामर है, वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, वही सारी रेपिटेशन है, वही पैटर्न है. I was never bored. Why? Because I constantly was finding different things that interest me. I was finding different stuff on SoundCloud. I was finding different podcasts to listen to of the subjects that were of my interest. I was constantly finding different TED Talks on different, genres and different topics and different fields, from neuroscience to biology to teaching to education technology to information technology and so on and so forth. तो आपको जो भी टॉपिक इंटरेस्ट करता है उसकी चीज़ें निकालें, डिफरेंट स्पीकर्स को सुने, इंटरव्यूज़ सुनना आपको अच्छा लगता है, लोगों के इंटरव्यूज़ सुने, प्रेसिडेंट्स के, सेलिब्रिटीज़ के, उनको बात करते हुए सुने, ऑथर्स के इंटरव्यूज़ निकाले, उनको बात करते हुए सुने. देर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब दैट डू बुक रिव्यूज़. दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे. A, they're talking in English, so you will get a lot of vocabulary from there. B, the subject itself is very interesting. You are going to get to know the book without even reading the book, because the other person has read it and now they're doing a review on it. They're telling you the goods and bads, the pros and cons of the book, the plot and the story and how it develops and everything. So that helps a lot. Third, watch dramas. ये सजेशन तो आपको हर जगह मिलेगा ना कि आप नेटफ्लिक्स के ऊपर ड्रामास देखना शुरू कर दें, बट बी वेरी केयरफुल, आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन, बी वेरी केयरफुल अबाउट द जॉनर ऑफ द ड्रामा. I will never recommend you to watch street crimes drama. Why? Because you will learn the street language then. Watch those dramas in which there is the use of professional vocabulary, professional jargons like suits. I think I've mentioned it already in the group. Suits, corporate एनवायरनमेंट का ड्रामा है, तो उसमें कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको बहुत सारी सीखने को मिलेगी. लॉ लिटिगेशन के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट ऑल्सो दोज ड्रामाज विच डील विद द डेली लाइफ सिचुएशंस. उसमें बहुत सारे लाइट हार्टेड सिटकॉम्स हो सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है.
डिफरेंट ब्लॉग्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो आपको रेकमेंड करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में से आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो, जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है, चाहे वो, और हाँ एक्सेंट भी ज़रूर देखें, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट्स की चीज़ों को देखें ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो दायरा है वो बढ़ना शुरू हो। अच्छा, यहाँ तक मैं इस सेशन को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको लंबा नहीं करना चाहती। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो हैं वो आपको ऑब्वियसली हर चीज़ में टाइम लगता है, everything takes time in learning. Language is also a skill, just like you're learning a skill on or about selling on Amazon or being a service provider or being an investor or whatever. उस स्किल को आप सीख रहे हैं, इसी तरह लैंग्वेज भी एक स्किल है. Learn to invest on this skill as well. Why? Because this is gonna go a long way. There's no shortcut. सॉरी, देयर इज नो शॉर्टकट एज सच के जी मैंने कॉल करनी है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में एक क्वेश्चन का आंसर किया कि जी हमने ब्रांड को मैंने कॉल करनी है तो मुझे क्या कहना चाहिए उन्हें. नीचे लोगों ने उनको कमेंट्स में रिप्लाई किया हुआ था कि जी यहाँ ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाइए, वहाँ पे स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है कॉल्स का, उसको उठाएं, उसको सामने रखें और कॉल करें. ठीक है, अच्छी बात है. बिग फॉर एज अ बिगिनर दिस विल वर्क, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एवरी सिचुएशन. ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड आपसे सिर्फ सिर्फ वही बातें पूछे. मैं अमेजोन अगर सीख रही हूँ, मैं होलसेल के ऊपर काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि अगर मुझे मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी परफॉर्म करने वाली प्रोडक्ट्स चाहिए तो आई विल हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन विद द ब्रांड और द डिस्ट्रीब्यूटर और द सप्लायर पर से. सो to build that connection, would that script be enough? Of course not. The script will not be enough. You will have to talk as a human, as a person, as an individual to them. तब आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ उनको ईमेल लिखना है जी, टेम्पलेट है वो उठा के दे दें. क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जी, कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट है जी, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे लोग उठा के उसको कॉपी कर रहे हैं. कभी किसी ने उसको पढ़ने की भी जहमत नहीं की कि उसकी पहली 2 लाइन्स में ही 10,000 गलतियां. अगर मेरे जैसा बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला होगा तो वो कभी नहीं करेगा. ये चीज़ें आपके वैल्यू एडिशन होती हैं, आपका एज अ पर्सन आपका वैल्यू एडिशन होती है. डू नॉट जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एज a service provider, as somebody who is a virtual thing and sitting miles away from the actual client, और आप जो मर्जी करेंगे उसके साथ, तो बेचारे के साथ आप जो मर्जी करेंगे, आप खुद अपने साथ क्या कर रहे हैं. थिंक अबाउट दीज थिंग्स, इन्वेस्ट टाइम, लर्न. Also, and a very short announcement, my business English communication batch 2 is about to begin on 4th April. So if you know somebody who needs to learn English on war footings, please recommend it to them. It is going to be face to face and online both. Face to face होगा लाहौर में XX ब्लॉक में, और ऑनलाइन तो ऑफ कोर्स वी विल डिसाइड कि हम किस टाइम पे कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं. जो लोग लाहौर से बाहर हैं उनके लिए कर रहे हैं. So this was it. But this is not the end of the solutions, presenting solutions to you for the problems that we mentioned. I was really glad that a lot of people came up with answering the question कि जी हमें ये challenge आता है. There were more than 250 plus comments. So इसके ऊपर हम दोबारा भी एक छोटा सा सेशन रखेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Thank you so much for listening. अल्लाह हाफ़िज़.